देव्याः कवचं विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्न्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवता अस्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठङ्वा तेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यां परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यातमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नाप्तं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे ता न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मां मैद्री अग्न्याम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नश्येतां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दस्तिषो रक्षे चामुण्डा सवाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चतुर्षो मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अध्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिपकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंध्योः कढग्नि रक्षेत बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चांगुलीषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रंगुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकामे प्रदायिनी गुल्फ्योर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्रा कराली स केशां च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौबेरी त्वचंवागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्थि मेदांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु
शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिन रक्षेन मे धर्म धारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षा चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदीच्छेषु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं संग्रामं मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धाते स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति श्रीदेव्याः कवचं सम्पूर्णम्।